Okay, so Jai Hind everyone. I, Aditya Verma, welcome you all to our channel Defense Mavericks. And today we are here with the most important current affairs for defense that is going to help you in your AFCAT 1 2025 examination. AFCAT एग्जाम जो है उसमें डिफेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके जीएस पार्ट में एंड ये वीडियो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करने वाला है तो स्टे विथ अस and you will see most of the questions coming right out from this video and this is going to be very helpful. So without wasting any time, let's get started. Okay, so start karte hain first of all with the chiefs that we have. Okay, so the current chief of air staff is Air Chief Marshal Amarpreet Singh. Okay, Air Chief Marshal Amarpreet Singh. The current chief of army staff is General Upendra Dwivedi. The Chief of Naval Staff is Admiral Dinesh K. Tripathi, and the Chief of Defense Staff is General Anil Chauhan. Okay, some other things that we must remember is like who was the first Chief of the Air Staff. Okay, so the first Chief of Air Staff or the first Indian Chief of Air Staff was Air Marshal Subroto Mukherjee. Okay, Air Marshal Subroto Mukherjee. Okay, the first chief of army staff or the first commander in chief for army was General K.M. Karyappa. Okay, General K.M. Karyappa was the first commander in chief. देखिए 1950 से पहले जो इंडियन आर्मी का हेड होते थे उन्हें कमांडर इन चीफ कहा जाता था. ओके, बिकॉज टिल दैट टाइम वी वर स्टिल अंडर द ब्रिटिश रूल, नॉट एग्जैक्टली बट स्टिल, जैसे हमारे प्रेसिडेंट नहीं होते थे, हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, उसी तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जगह कमांडर इन चीफ होते थे. तो ही वाज जनरल के एम करियप्पा, फर्स्ट इंडियन. अदरवाइज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आफ्टर 1950 वाज जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा. ओके, जनरल राजेंद्र सिंह जाडेजा. ओके, General K.M. Karyappa was later on also risen to the post of Field Marshal. Right, he was the second Field Marshal after Sam Manekshaw. The first Field Marshal was Sam Manekshaw. Okay, General Sam Manekshaw. Chief of the Naval Staff is Admiral Dinesh K. Tripathi. अभी तक Navy से there has been no one who has been risen to the rank of Marshal. In Air Force we have the Marshal of the Air Force, Arjun Singh. Okay, who was also the first Air Chief Marshal. जैसे क्या होता था ना कि पहले एयर फोर्स में द हाईएस्ट रैंक वाज एयर मार्शल, बट बाद में जब से अर्जन सिंह बने थे तब से उन्हें एयर चीफ मार्शल को बना दिया गया था एज द हाईएस्ट पोस्ट. ओके, एंड करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज जनरल अनिल चौहान एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाज जनरल बिपिन रावत. ओके, so these are certain things that we must remember. Okay, let's move ahead. Obviously, the ranks and structure of the Indian Army that we have, Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy that we have, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्पेशली कंपैरेटिव मैनर में. कंपैरेटिव मैनर का मतलब क्या कि आपसे पूछेगा कि लेट्स से व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल इन इंडियन आर्मी. ओके, और व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन इन इंडियन आर्मी और ग्रुप कैप्टन इन द इंडियन नेवी. Alright, so you should learn it comparatively. These are all officer ranks. It starts from lieutenant in army, flying officer in the Indian Air Force, sub-lieutenant in Navy, and goes on to in field marshal, master of the Air Force, and the admiral of the fleet. Okay, what I have observed is that most of the time they are going to ask questions from this region. Okay, most of the time इन रीजन से पूछा जाता है. एंड वन थिंग दैट यू विल ऑब्जर्व इज नेवी और एयरफोर्स में. ओके, सी यहां से विंग कमांडर, कमांडर, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन, एयर कोमोडोर, कोमोडोर. ओके, ये तीन रैंक्स काफी सिमिलर साउंड करते हैं, राइट. वेयर एज इन आर्मी इट इज लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड ब्रिगेडियर. ओके, सो वील जस्ट हैव दिस थिंग इन आवर माइंड. ओके, ऑल्दो अगर आपको इंडियन एयरफोर्स पे यू नीड मच मोर डिटेल्ड थिंग्स, तो वी ऑलरेडी हैव चिन्मय सर कवरिंग
all these things in a separate video in all about Indian Air Force. Okay, so you can go there and visit. You can visit our that video, and you can see that a lot of things are being covered about the aircrafts, etc. Okay, so I'm not covering it again. If you want to see that in a lot of details, you can easily go to our channel. Okay, you can easily go to our video and you can see that. Okay, then yes, some of the commands that we have of Indian Air Force, Indian Army, and the Indian Navy. Okay, Indian Air Force के जो commands है, the Western Command is located in New Delhi. Okay, the Central Command is located in Prayagraj or Allahabad. Okay, the Eastern Command is there in Shillong. The Southwestern Command is there in Gandhinagar. Okay, then the Southern Command is there in Tiruvananthapuram. Okay, the Indian Air Force has two type of command. These are basically the fighting commands, and then we have the maintenance command. Okay, for example, the maintenance command is there in Nagpur, and we have the training command in Bangalore. So non-combat command and combat command, we have both types. Okay, then when we come to army, we have the Northern Command in Udhampur, Jammu Kashmir, Training Command in Shimla, Western Command in Chandimandir, Punjab, Central Command in Lucknow, Eastern Command in Kolkata, Southern Command in Pune, and the Southwestern Command in Jaipur. Right. When we'll come to Navy, okay, for Navy we will have the Western Command in Mumbai. Okay, we have the Eastern Command in Vishakhapatnam, and we have the Southern Command in Kochi, Kerala. Alright, so we'll just remember these things as well. Okay, these are the static part. Okay, यहाँ से काफी questions देखने को मिलते हैं जो AFCAT में आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं. Okay, so please remember these things. All of these there, I've compiled them according to my experience. जो questions आते हैं आपको defense से specifically. Obviously there are more. For example, sports की एक अलग video आएगी, एक geography की अलग video आएगी. Okay, and एक miscellaneous like most important current affairs की अलग आएगी. Okay. Next, AFCAT also asks you question a lot from the mottos and insignias, all these from the different forces that we have. Okay, so starting most important with the Indian Air Force. Okay, the motto is touch the sky with glory या फिर नभ स्पर्श दीप्तम. So it is also there in English as well as in Hindi or Sanskrit. Okay, to touch the sky with glory या नभ स्पर्शम दीप्तम. अब ये नभ स्पर्शम दीप्तम कहाँ से लिया गया है? तो this has been taken from Bhagavad Gita. Okay, this has been taken from Bhagavad Gita. Right, नभ स्पर्शम दीप्तम. Okay, एक और क्रेडो है इंडियन एयरफोर्स का which says okay, people first. Okay, mission always. ये मेरे ही अटेम्प्ट में आया था लास्ट टाइम. Okay, people first, mission always. मेरी शिफ्ट में आया था. Alright, this is also written at a lot of places when you go to the Indian Air Force. Okay, people first, mission always. After that, when we come to Indian Army, the service before self or seva parmo dharma. Okay, service before self or seva parmo dharma. This is also the credo of the National Defense Academy. Right, Indian Navy का है शम नो वरुणा. Okay, or invocation to Lord Varun, the god of the sea. Okay, Sham no Varuna. The Indian Coast Guard. Okay, that is we protect or Vayam Rakshama. Okay, now ये जो चारों forces हैं, Indian Air Force, Indian Army, Indian Navy and the Indian Coast Guard, these for only come under the Ministry of Defense. Okay, these four only come under the Ministry of Defense. Apart from that, जितने other भी हैं like BSF, CISF, ITBP, SSB, Assam Rifles, ये सारे के सारे आते हैं Ministry of Home Affairs के अंदर. Okay, और ये कहलाते हैं CAPFs, Central Armed Police Forces. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सिर्फ ये चार आते हैं. यू जस्ट रिमेंबर इट लाइक दैट कि जिसके लिए भी आपको एक SSB, PSB कोई भी ऐसा प्रोसेस से गुजरना हो, they will come under the Ministry of Defense. आपको BSF, ITBP, SSB इनके लिए नहीं जाना पड़ेगा. Okay, now let's come to our CAPFs.
Okay, we'll first see those CAPFs which are deployed on special borders. For example, हमारा जो BSF है, BSF is there on the Pakistan as well as on the Bangladesh border, and they are there at the peace time. Peace time पे ये maintain करते हैं, but when there is a war, तो हमारी army इन्हें replace कर देगी and they will become the reserve force. Okay, BSF was formed in the after the 1965 war, क्योंकि हमें समझ में आया कि we need a permanent force who is guarding there and the army needs to train for war. Right? तो BSF द मोटो इज ड्यूटी अनटू डेथ या जीवन प्रयत्न कर्तव्य. ओके, नाउ यू विल आंसर मी वन क्वेश्चन. अभी अभी BSF ने एक रीसेंट अपनी ऑपरेशन को लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? ओके, ऑन द पाकिस्तान बॉर्डर. राइट, we covered that in our January current affairs, so you will answer me. What is the name of the operation? Okay, then BSF is the only organization in the CAPS which has its own, aircrafts as well as water equipments as well as land equipments. Okay, so like a complete force in itself. Okay, then we have the ITBP. Okay, the ITBP is bordering the China border. ओके, एंड उनका मोटो है वेलर डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन ऑन ड्यूटी या फिर शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा. ओके, वेलर डिटर्मिनेशन डिवोशन टू ड्यूटी शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा. ओके, देन SSB सशस्त्र सीमा बल. ओके, सशस्त्र सीमा बल, दिस गार्ड्स आवर नेपाल बॉर्डर. ओके, and their motto is Seva Suraksha Bandhutva, that is service, security, and brotherhood. Okay, then Assam Rifles. Assam Rifles is present on the Myanmar border, and Assam Rifles is quite an interesting force. Why? Because Assam Rifles has a dual control. ये किसी थोड़े हद तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी आता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर भी आता है. कैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? ओके, सी, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, दे हैव देयर ओन हेड्स. लाइक आर्मी के लिए एयर चीफ मार्शल है, सॉरी, उसके लिए चीफ मार्शल है, आर्मी के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है. ओके, बट ये जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होते हैं ना, इनको हेड करते हैं IPS ऑफिसर्स. ओके, दे आर हेडेड बाय IPS ऑफिसर्स. राइट, but Assam Rifles is the only force which is not headed by an IPS officer. Assam Rifles is headed by a lieutenant general. Okay, but still all of it other operations come under the Ministry of Home Affairs. It is listed under the Ministry of Home Affairs. So it is the only force that has a dual control. ठीक है, तो स्पेशल है, याद रखिएगा. Assam Rifles मोटो क्या है? फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल या फिर Sentinels of the Northeast. Okay, Sentinels of the Northeast, your friends of the hill people. Myanmar border is guarded by Assam Rifles. Okay, next, CISF Central Industrial Security Force. उनका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. ओके, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. CRPF द लार्जेस्ट रिजर्व फोर्स, उसका मोटो है सर्विस एंड लॉयलिटी. ओके, एंड क्रेडो है तेजस्वी नावधित मस्तु. ओके, जिसका मतलब होता है लेट ब्रिलियंस इमर्ज आउट ऑफ एंडेवर. ओके, लेट ब्रिलियंस इमर्ज आउट ऑफ एंडेवर. देन NSG. अब ये NSG भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि NSG इज अ फोर्स जहां से आर्मी से भी लोग जाते हैं एंड इवन पुलिस फोर्सेस से जाते हैं, लाइक CRPF, CISF, इवन IPS से लोग जाते हैं. Okay, so sometimes people confuse कि NSG is a part of army. No, they are not. Okay, these NSGs are also called as Black Cat Commandos. Okay, and they are mainly meant for urban terrorism. Okay, तो इनका काम क्या है? इनका मोटो क्या है? इनका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा. That is best security everywhere. Okay, then we have the NDRF. Okay, the National Disaster Response Force. उनका मोटो है सर्विस टू द पीपल इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर ऑलवेज एंड एवरीवेयर. दैट इज आपदा सवा सदैव सर्वत्र. ओके, देन वी हैव द टेरिटोरियल आर्मी. ओके, टेरिटोरियल आर्मी.
Okay, their motto is vigilance and valor, सावधानी व शूरता. ओके, सावधानी व शूरता. दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड. ओके, टेरिटोरियल आर्मी का पूछा गया है, एनसीसी का पूछा गया है. ओके, एनसीसी का मोटो क्या है? दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और एकता और अनुशासन. ठीक है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन. देन वी हैव द RNAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, द इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ आवर नेशन. तो उसका मोटो है धर्मो रक्षति रक्षिताः. That is, the dharma protects when it is protected. Okay. Then we have NIA, the National Investigation Agency, जिसका मोटो है राष्ट्र रक्षाणम आद्य कर्तव्यम. Okay, that is, nation's protection is the first duty. Right. Then we have IB, Intelligence Bureau. Okay, Intelligence Bureau. The motto is Jagratam Harnisam, that is always alert. ठीक है. And then we have the CBI, Central Bureau of Investigation, जिसका motto है Industry, Impartiality and Integrity. Okay, so these were some of the important organizations that is related to defense that we have. ठीक है, प्लीज इनके मोटोज याद रखिएगा. ऑल्सो अटैच देयर लोगोज सो दैट आपको थोड़ा पिक्चर मेमोरी मिल जाए. ओके, चल लेट्स मूव अहेड. इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ओके, प्लीज सी देम. ऑलराइट, नेक्स्ट, सम ऑफ द इक्विपमेंट्स दैट वी हैव. So the first one is the Phantom red dot sight pistol that has been deployed by Astra Defense. Okay, so this is a double stack .32 ACP pistol and it is India's first ever red dot sight pistol. ये यहाँ पे जो red dot sight है ना, इंडिया की पहली ever red dot sight pistol है. क्या नाम है? Phantom, developed by Astra Defense. Okay, then Abhed. Abhed is advanced ballistic for high energy defense. This is a basically a bulletproof jacket. ये एक lightweight bulletproof jacket है जो कि डेवलप किया गया है डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के जॉइंट कोलैबोरेशन से. ओके, अभेद बहुत ज्यादा न्यूज में थे. ओके, सो प्लीज रिमेंबर, अभेद क्या है? इट इज लाइटवेट बुलेट प्रूफ जैकेट और अस्त्र डिफेंस का फैंटम इज अ रेड डॉट साइट पिस्टल. ओके, नेक्स्ट, वज्र शॉट. ओके, वज्र शॉट बनाया गया था जो कि क्या है? वो एक एयर एंटी ड्रोन गन है. ओके, डेवलप किया गया था बाय बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस. ओके, इट इज अ हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन. आज के टाइम पे ड्रोन वॉरफेयर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. ओके, द यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का यूज करने का, जो कि बहुत ज्यादा इजराइल हमस वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर में देखा गया. ओके, सो वज्र शॉट is to shoot down the drones that are there. Okay, it is also used to transport a lot of prohibited drugs etc across the borders. तो वज्र शॉट. ठीक है. देन पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम. ओके, पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम वी हैव टेकन दिस फ्रॉम रशिया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल ने साइन किया है एमओयू रशिया के रॉसबोरॉन एक्सपोर्ट के साथ. ओके, इसे प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, इट इज अ एयर डिफेंस गन सिस्टम. चलो, यू विल टेल मी इन द कमेंट्स दैट अपार्ट फ्रॉम पंतसीर रशिया के साथ हमारा और कौन सबसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है. ओके, हमारा और कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया यूज करती है अपार्ट फ्रॉम पंतसीर. ओके, विथ रशिया. यू विल टेल मी इन द कमेंट्स. ओके, चलो, next is a Drishti 10 Starliner. This is a UAV or a drone that has been developed by the Adani Defense and Aerospace. Okay, तो private sector के drones भी अब Indian Army ले रही है. Alright, and this is a surveillance drone for the mainly meant for the Indian Navy. ठीक है. Next, the Subaltern Logistics Drone. ठीक है, इसे किसने बनाया है? तो इसे बनाया है एंड्योर एयर ने. And this is a logistics drone for the Indian Army. Obviously, logistical support के लिए and equipment या कुछ भी राशन कुछ भी पहुंचाना हो तो उसके लिए this drone is there to take things in the difficult regions जहाँ पे लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है.
ओके एंड एज आई हैव सेड कि ड्रोन वॉरफेयर या फिर ड्रोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ने वाला है इन द कमिंग डेज. ओके देन Arca Solar UAV. Okay, the Arca Solar UAV has been developed by the high altitude research. Sorry, by new space research, and this is for high altitude pseudo satellite है ये. ठीक है, this is a high altitude pseudo satellite. Arca Solar UAV. Then E-Tarang system has been launched by the Ministry of Defense. ओके इट इज अ AI इनेबल्ड सॉफ्टवेयर और इससे मैन्युफैक्चर किया है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने अलोंग विथ बाईसैग एन. ओके इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओनली. राइट नेक्स्ट लॉर्ड्स एन. अब ये लॉर्ड्स एन क्या है? लॉर्ड्स एन इज अ लेजर बेस्ड सिस्टम यूज्ड बाय द इंडियन नेवी टू डिस्पोज अनएक्सप्लोज्ड ऑर्डिनेंस एंड ओल्ड एम्यूनिशन. ठीक है, उसके पास जाए बिना आप लेजर को यूज करके किसी एक्सप्लोसिव को डेटोनेट करो. ठीक है, कि एक इंसान को जाने की ना जरूरत पड़े या उसे यू मेक इट पैसिव. ठीक है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय चेस हैदराबाद एंड DRDO. ओके इट हैज बीन डेवलप्ड बाय चेस हैदराबाद एंड DRDO. ऑलराइट देन गाइज मेक श्योर दैट ओके आपको अगर इसके नोट्स चाहिए ना तो दिस सेम थिंग आई विल बी अपलोडिंग हियर ऑन आवर टेलीग्राम चैनल ऑफ डिफेंस मैवरिक्स. Okay, make sure you also follow us on our Instagram handle. And if there is any query related to the courses that we do, written courses जो हम चलाते हैं इंडिया एयरफोर्स और CDS के लिए, तो you can contact us on this given number. ठीक है, चलो so let's move ahead. देन आकाश मिसाइल्स. ओके तो आकाश मिसाइल्स इंडिया की ऐसी पहली सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे हमने अर्मेनिया को डिलीवर किया है. Okay, we know that missiles are of various types, like there is surface to air, there is air to air, there is surface to surface. Okay, तो आकाश is the first surface to air missile, that is SAM. Okay, अगर हम missiles की बात करें तो the first 5 missiles that were developed by the Integrated Missile Development Program, that were उसको ऐसे लिख सकते हैं PATN. I already discussed it in the January current affairs, right? P से था हमारा पृथ्वी, ए से था अग्नि. ओके टी से था हमारा त्रिशूल, एन से था नाग और ए से था हमारा आकाश. राइट तो पृथ्वी एंड अग्नि वेयर व्हाट? दे वर सरफेस टू ओके सरफेस. त्रिशूल this was surface to air. Nag was our anti-tank. Okay, and this was also our surface to air. Okay, and this was sometimes also used as air to air. Okay, Akash is also used as air to air, but India ka the SAM version, the surface to air missile version, was delivered to Armenia. Armenia or Azerbaijan mein we know there's conflict that is going on. Okay, so these are the main missiles. Then we know that missiles दो type के होते हैं, एक होता है ballistic, right, based on trajectory, और एक होता है cruise missile. Right, ballistic missile follows a trajectory like this, parabolic trajectory. It goes above the atmosphere level, right, space में चला जाता है. Whereas cruise missile goes like this, then it cruises and then it drops on the target. Ballistic missile का range काफी ज़्यादा होता है compared to the cruise missile. Okay, the most important ballistic missiles are Prithvi, Agni, and cruise missile में obviously we have BrahMos. Okay, so BrahMos, which is a joint venture of India and रशिया. अब आपको बताना है थोड़ी चीजें ब्रह्मोस के बारे में, दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ ब्रह्मोस, क्योंकि रिसेंटली बढ़ाया गया था. ओके देन ब्रह्मोस में कितने इंजन यूज होते हैं, कितने टाइप का फ्यूल यूज होता है, इज इट अ सॉलिड फ्यूल और इज इट अ लिक्विड फ्यूल. ओके यू विल सी दिस एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस को हमने किससे डिलीवर किया है फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, फिलीपींस को किया था. Okay, तो surface to air missile first that we have delivered to Armenia is Akash, and BrahMos को किया था फिलीपींस को. Okay, चलो next Prahasta. What is this Prahasta? Prahasta has been developed by Zentech. ठीक है, and this is a AI powered robot to basically infiltrate into hostage situations with a gun fitted on it. Okay,
इसे क्वाड्रप्लेट कहते हैं क्योंकि चार पैरों वाला ये रोबोट है, जो कि एक हॉस्टेज सिचुएशन या फिर ऐसे सिचुएशन जहां पे टेररिस्ट छुपे हुए हैं, तो वाई टू सेंड आवर सोल्जर्स फॉर देम टू डाई, तो देयरफॉर वी हैव डेवलप्ड प्रहस्ता. ओके, जेनटेक हैज डेवलप्ड दिस प्रहस्ता. ओके, जिसपे गन फिट करके, गन माउंट करके वी कैन सेंड इट इनसाइड. ओके, देन अग्नि अस्त्र. Okay, Agni Astra has been developed by the Indian Army, and that is a multi-target detonation device. Okay, that is a multi-target detonation device, Agni Astra. ठीक है, ये प्रहस्त को डिस्प्ले किया गया था इवन इन आवर रिपब्लिक डे परेड एंड दी आर्मी डे परेड मेनली. ओके, दैट हैपेंड इन पुणे दिस ईयर. ओके, तो आर्मी डे परेड इस बार कहाँ हुआ था? The Army Day, that is on 15th January. Army Day parade कहाँ हुआ था? तो that happened in Pune. The Air Force Day parade 8th October, वो कहाँ हुआ था? तो that happened in Chennai this time. And the Navy Day parade, where did it happen? तो it happened in Vizag. Okay, 4th December. Okay, so next we have Rumi 1, जो कि क्या है? Which is reusable launch vehicle. Okay, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और थोड़ा मोबाइल लॉन्च व्हीकल है, विच इज डेवलप्ड बाय स्पेस जोन इंडिया. ओके, तो ये वर्ल्ड का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है. ओके, रूमी 1 रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल. राइट, वर्ल्ड का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है. ठीक है, रूमी 1, प्लीज रिमेंबर. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोरावर. Okay, the light tank Zoravar that has been developed by DRDO with Larsen and Turbo L&T. Okay, please remember Zoravar light tank हमने develop किया है. Apart from that, हमारे most important tank कौन कौन से हैं? We have the T90 Bhishma. Okay, and we have the T72 Arjun. Okay, T90 Bhishma, T70 Arjun. These are the most important ones that we use. Main battle tank. Okay, MBT Arjun that is there, and T90 Bhishma that is there. ठीक है, तो Zoravar light tank. Okay, next Sebex 2. It is a explosive. क्या है? It is a explosive which is more explosive than TNT. Okay, which is more damaging than TNT. Okay, it has been developed by the Economic Explosive Limited, EEL. ठीक है, इसे डेवलप किया है, a subsidiary of Solar Industries under Make in India. So Sebex 2 is a explosive, and it is among the most potent non-nuclear explosive. तो कैसा explosive है? Non-nuclear. Okay. Then Indian Army has launched Vidyut Rakshak, which is a integrated generator monitoring and control system. ठीक है, Vidyut Rakshak. Okay. Next, Nagastra 1. ठीक है, नागस्त्र 1, इट इज एन इंडिजिनस सुसाइड ड्रोन. ठीक है, सुसाइड ड्रोन मतलब कि इसमें बॉम्ब्स फिट होंगे और इसे किसी ऐसे लोकेशन पे भेजा जाएगा, एक रिमोट लोकेशन पे जहां पे लेट से कोई टेररिस्ट छुपे हुए हैं. तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग आवर सोल्जर्स, ओके, एंड इट इज दे आर देयर इन सच सिचुएशन कि वहां जाके दे कैन हैव हेवी डैमेज, तो व्हाई टू सेंड देम? वी कैन सेंड सम ड्रोन्स जो कि जाके सेल्फ एक्सप्लोडिंग होगा एंड दैट विल कॉल डैमेज. So this is our indigenous suicide drone, Nagastra 1. Okay. Then Barbaric URCWS. Okay. Barbaric URCWS ये क्या है? Again Zen Technologies के द्वारा डेवलप किया गया. This is ultralight remote controlled weapon system. Okay. So this name Barbaric has been taken from basically Mahabharata. There was a character named Barbaric. So Barbaric was the grandson of Bhim. Okay, and son of Ghatotkacha, right, in the epic Mahabharata. ठीक है, तो the ultralight remote controlled weapon system URCWS. Okay, Zen Technologies. Okay, this is Barbaric. So this will be deployed at places with a fitted camera जहाँ पे people at some high altitudes जहाँ पे instead of soldiers monitoring that place, instead of soldiers, this URCWS will monitor that place. Okay, to make sure कि intrusion नहीं हो रहा in our areas. Right. Next, again very very important to Him Kavach and Ashmita or ASMI. Okay, तो DRDO ने डेवलप किया है Him Kavach, which is a multi-layer cold weather clothing system. ठीक है,
स्पेशली बहुत कोल्ड वेदर्स के लिए, लाइक टेम्परेचर्स फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस फॉर द मिलिट्री पर्सनल स्पेशली डिप्लॉयड इन कश्मीर एंड अदर रीजन्स। ठीक है, ये इंश्योर करता है ऑप्टिमल इंसुलेशन, ब्रीदेबिलिटी एंड मॉइस्चर प्रोटेक्शन। ठीक है, ताकि इन दोज gruesome conditions our soldiers can perform well. Okay, Him Kavach by DRDO. Then ASMI or Ashmita has been developed by Lokesh Machines Limited under Lieutenant Colonel Prasad Bansod. ठीक है, they are 9 mm submachine guns. Okay, ASMI नाम है और अश्मिता, ठीक है, सब मशीन गन्स हैं जो कि इंडिया में यूज किए जाएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट K9 वज्रटी। ओके, K9 वज्रटी क्या है? दिस इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। ओके, ये टैंक जैसा दिखता है लेकिन ये टैंक नहीं है, दिस इज अ आर्टिलरी। ओके, जस्ट लाइक बोफोर्स एक्सेट्रा। बट यूजुअली आर्टिलरीज में क्या होता था, दैट आर्टिलरीज को वी हैड टू कैरी विद द ट्रक्स एक्सेट्रा। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना एक आर्टिलरी को ही हमें टैंक के बॉडी पे फिट कर दें, सो दैट इट कैन मूव ऑन इट्स ओन। So K9 Vajrati is that. It is a joint venture of India and South Korea. Actually, this is a South Korean technology only. Okay. It is a modified version of the K9 Thunder, a South Korean self-propelled howitzer. और उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू इंडिया में we produce at as K9 Vajrati. Okay, so this is a self-propelled artillery. Please do not misunderstand it as a part of the armored core. Okay, this is artillery. ठीक है, आर्मर्ड कोर के जो आपके बंदूक होते हैं वो छोटे होते हैं, नॉजल्स थोड़े छोटे होते हैं इससे। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी ह्यूज। ओके, देन C295 एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इट विल बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ओके, टाटा हैज कोलैबोरेटेड विथ एयरबस एंड उन्होंने सेटअप किया है वडोदरा में इसका ओके प्रोड्यूसिंग स्टेशन, जहां पे हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को कैरी करेंगे। ओके, दिस इज अ मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दैट वर डिजाइन्ड एंड इनिशियली मैन्युफैक्चर्ड बाय स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी कासा और नाउ एयरबस। ओके, तो दिस इज C295। राइट, देन अभय, which is the anti-submarine warfare shallow watercraft machine, okay, that has been deployed by the Indian Navy, okay, and इसे प्रोड्यूस किसने किया है? इसे प्रोड्यूस किया है GRSE, okay, GRSE ने, गार्डन रिसर्च एंड शिप बिल्डर्स ने इसे प्रोड्यूस किया है। ओके, अभय ASWSWC। ऑलराइट, देन INS निर्देशक। ठीक है, INS निर्देशक इज व्हाट? इट इज सर्वे शिप। ओके, जिसे डिप्लॉय किया गया है विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में। राइट, INS निर्देशक। ठीक है, देन द S-4 न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स दैट आर देयर, ओके, that has been launched for the first time. They were launched for the first time in 2020, but now this is India's 4th nuclear capable submarine, the S-4 submarines. And again, very very important, INS Arighat. Okay, India's second nuclear power ballistic missile submarine, INS Arighat, has been also deployed in the Indian Navy. ठीक है, INS Arighat. Okay, then some of the most important questions that come from the Indian Navy is कि अलग अलग क्लासेस के कौन कौन से सबमरीन्स थे, शिप्स थे। ओके, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द इंडियन नेवी। ओके, एंड दिस इज अ लाइक ओवरव्यू ऑफ इट। ठीक है, तो रिसेंटली INS नीलगिरी, INS सूरत एंड INS वगशीर, ओके, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन द डिसंबर करंट अफेयर्स, बट स्टिल at one place I am covering. Okay, they have been inducted in the Indian Navy. तो नीलगिरी, सूरत, वगशीर, तो if we locate them, तो वगशीर is here, okay, नीलगिरी is here and सूरत is here. Okay, they are of different products. तो आपका नीलगिरी जो है they come under the project 75. Okay, sorry, वगशीर that comes under the project 75. ये project 17 क्या है, 5 क्या है? These are diesel electric attack submarines. ओके, जिन्हें स्कॉर्पियन क्लास या कलवरी क्लास सबमरीन भी कहा जाता है। ओके, सो समटाइम्स दे आर आल्सो नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट शिप और द फर्स्ट सबमरीन।
बट अदरवाइज इट इज अ स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, और उसकी लास्ट है वगशीर. Okay, so Kalvari, Khanderi, Karanj, Vela, Vagir or Vagshir. The list has been completed. Project 75. Okay, very, very important. Then INS Surat क्या है? INS Surat is a stealth guided missile destroyer. Okay, so Project 15B. It is about the stealth guided missile destroyers. Okay, and Surat is also the last. So these are called as Vishakhapatnam class destroyers. Okay, Vishakhapatnam class destroyers. Okay, INS Surat. Then Project 15A, that was the Kolkata class guided missile destroyers. Okay, that had INS Kolkata, Kochi and Chennai. Okay, उसी का एक extension था 15B. Then we had the Project 17A, which is stealth frigates, और उसकी पहली INS नीलगिरी has been inducted recently. Okay, नीलगिरी क्या है? Stealth frigate है. Okay, Nilgiri is a stealth frigate. So please remember Project 17A, 15A, 15B and Project 75. Very, very important projects, and because उनके ships को अभी induct किया गया है, they are in their news again. ठीक है, तो huge chances of this coming. Please note this slide. ठीक है, चलो let's move ahead. And specially जो अभी news में, that is Vagshir, नीलगिरी and सूरत, और किस project को वो belong करते हैं. You will remember this. Okay, moving ahead, we now come to the defense exercises. Again, very, very important section जहाँ से काफी questions देखने को मिलते हैं. Okay, especially in AFCAT as well as in CDS. So I have tried to cover a lot of it. Okay, even those who are not in news. Although questions ज़्यादातर वहीं से आते हैं जो news में होते हैं, but still. Okay, so defense exercises को हम तीन तरीके में बांट सकते हैं. One is called as the domestic, then the multilateral and bilateral. Okay, so domestic ones which is done within the country between the army, navy and air force. Okay, multilateral as we know between multiple countries, and bilateral that India एक दूसरे country के साथ कर रहा है. I have listed some domestic and multilateral exercises. Domestic में जैसे सुरक्षा कवच by army, bull strike tri services exercise, गांडी विजय, हिम विजय, विजय प्रहार, पश्चिम, और ये सब आर्मी के हैं. पश्चिम लहर is by navy, वायु शक्ति is by air force, then again शत्रुजीत and चक्रव्यूह are of army. Okay, आप इसे अच्छे से एक जगह नोट डाउन कर लीजिए and make sure that you are just reading them again and again. Okay, then multilateral exercise. Okay, IB Samar. Okay, India, Bangladesh and South Africa. Okay, sorry, this will not be Bangladesh, this will be Brazil. Okay, IB Samar. Okay, this is a naval exercise between India, Brazil and South Africa. Okay, naval exercise IB Samar. Okay, I for India, B for Brazil and SA for South Africa. MAR maritime exercise. Then Malabar exercise is between the Quad countries. Quad countries कौन कौन से हैं? They are India, Japan, Australia and the USA. ठीक है, तो South China Sea and the Pacific region में होता है Malabar exercise, Navy की. Then Pitch Black, which is an Air Force exercise conducted by Australia. Okay, India participates in that. Israel की होती है Blue Flag exercise Air Force की. USA करवाता है exercise Red Flag again Air Force. Okay, then Milan is one of the largest naval exercises that have been in the world, that is being conducted by Indian Navy. Then Tarang Shakti Indian Air Force conduct करवाती है for various air forces around the world. Okay, एक्सरसाइज सी ड्रैगन नेवी की एक्सरसाइज होती है बाय यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया. ओके, ऑलमोस्ट ऑल द कोड कंट्रीज इंक्लूडिंग साउथ कोरिया. ओके, देन IMT ट्राइलैट, दैट इज इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया. ओके, देन कोबरा वॉरियर इज अ एयर फोर्स एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, others are also covered. Okay, let's see them one by one. For example, if we see those who were there in news, तो इंडिया और यूएसए के जो जॉइंट एक्सरसाइजेस होते हैं आर्मी के, those were there in news, they were वज्र प्रहार, ओके, एंड युद्ध अभ्यास. ओके, वज्र प्रहार एंड युद्ध अभ्यास, ये दो एक्सरसाइजेस अभी रिसेंटली हुए हैं और ये इंडिया यूएसए के आर्मीज के बीच में कराए जाते हैं. ओके, वज्र प्रहार. देन वी सी दैट इंडिया श्रीलंका के बीच में भी अभी दो एक्सरसाइजेज हुए हैं, दैट इज
Slynex. Okay, Sri Lanka India naval exercise, and we have exercise Mitra Shakti. Okay, exercise Mitra Shakti, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ है. Alright. Then we had some other exercises also, like we had Sinbacks. What is this Sinbacks? This is Cambodia India bilateral exercise. Okay, so this happened with Cambodia. Okay, so Sinbacks याद रखना. Similarly, we have Winbacks. Okay, so Winbacks is with Vietnam. Okay, Vietnam. Alright. इंडिया यूएसए के साथ एक और हुआ था, दैट वाज कॉल्ड एज संगम. ठीक है, दिस वाज बिटवीन द मार्कोस इंडियन नेवी कमांडोज एंड द नेवी सील्स of the USA. Okay, so Indian Marcos and the Navy SEALs of USA exercise Sangam was also conducted. Okay, then India and Oman के बीच में कुछ exercises हुए हैं. Okay, for example, Naseem al-Bahr. Okay, Naseem al-Bahr ये हुआ है दोनों के नेवीज के बीच में. And we have exercise al-Najah. ओके, ये हुआ है दोनों के आर्मीज के बीच में. ठीक है, इंडिया एंड ओमान. देन वी ऑल्सो हैड सिम्बेक्स. ओके, और लेट्स कीप इट हियर. इंडिया सिंगापुर. ओके, इंडिया सिंगापुर के बीच में हुआ है सिम्बेक्स. ओके, सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, दैट इज Simbex. और उसके अलावा that we had was Agni Warrior. Okay, Agni Warrior that we had with Singapore. ठीक है, Agni Warrior that we had with Singapore. Alright, then we had exercise Harimau Shakti. Okay, exercise Harimau Shakti that we have conducted with Malaysian Army. Okay, important है, Malaysian Army के साथ conduct किया exercise Harimau Shakti को. Okay, exercise Desert Night. Okay, exercise Desert Night, ये important है थोड़ा. Okay, because this is of Air Forces और ये conduct हुआ है इंडिया यूएई और फ्रांस के बीच में. ठीक है, इंडिया यूएई और फ्रांस के बीच में किया गया है. दिस एक्सरसाइज कॉल्ड एज अ डेजर्ट नाइट. ओके, देन एक्सरसाइज, ओके आई एम राइटिंग दिस एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट. ठीक है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज सूर्य किरण. सूर्य किरण हम किसके साथ करते हैं? तो सूर्य किरण हम करते हैं Nepalese army के साथ. Okay, and especially our Gorkha regiment participates in that. Okay, Surya Kiran is also the name of our air display team. Okay, जिसमें Hawk aircraft use किया जाता है of the Air Force, so don't confuse with that. Okay, Surya Kiran as an exercise we do with Nepalese army, और Indian Air Force की display team का भी नाम Surya Kiran ही है. Okay. Then we have exercise Garud Shakti. Okay, Garud Shakti. This we do with Indonesia. ठीक है, this we do with Indonesia. अब now don't confuse. See, Indonesia के साथ Garud Shakti करते हैं, but when it comes to India France ना, और इसको अगर हम अलग अलग कर ले तो Garud, exercise Garud, the air forces of India and France do it. Exercise Shakti, okay, the armies of India and France do it. And Varun, okay, the navies of India and France do it. Okay, so Garud and Shakti, when they are different, it is India France, but Garud Shakti coming together, that is Indonesia. Okay, that is Indonesia. Then we have exercise, okay,
Shinyu Maitri. Okay, exercise Shinyu Maitri. Obviously by the name हमें पता चल रहा है किसके साथ है. This is with the Japanese Air Force. ठीक है. This is with the Japanese Air Force. Right. Then if we see some other exercises that were done, तो एक रिमपैक एक्सरसाइज हुई थी. ठीक है, which is one of the largest naval exercises that happens in the Pacific region. So Indian Navy also participated in that. Okay, तरंग शक्ति हमने देख लिया, Indian Air Force का था. Alright. So yeah, these were the exercises that were conducted by the Indian Army or Indian Navy and Indian Air Force in the recent times. Okay, in the recent times. Then 1-2 more were there, like Austra-Hind. Okay, obviously between Australia and India. And then we have Kazand. Okay, between Kazakhstan and India. So these are very evident by the names. Austra-Hind is between India and Australia, and Kazand is between India and Kazakhstan. That has been recently done. Okay, chalo. Now, talking about some of the important operations that have been conducted by the Indian Armed Forces. ठीक है, अगेन इनसे भी काफी क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं. तो वी विल सी व्हाट आर दीज ऑपरेशंस एंड व्हाट आर दीज ऑपरेशंस वेयर फॉर. ठीक है, तो कारगिल वॉर में 3 ऑपरेशंस जो किए गए थे बाय द आर्मी, बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड बाय द इंडियन नेवी, उसके ये नाम है. ओके, ऑपरेशन विजय बाय इंडियन आर्मी. Okay, Operation Safed Sagar by the Indian Air Force and Operation Trishul by Indian Navy. Kargil war that happened in 1999. 2024 ने हमने 25 years of Kargil celebrate किया था. Okay, 25 years of victory over Kargil. ठीक है. Although Operation Vijay is there in one more thing. जब हमने 1962 में गोवा एंड दमन एंड दीव का लिबरेशन किया था, that was also called as Operation Vijay only. Okay, so Operation Vijay 2 बार हमने किया. एक बार 1962 गोवा में और उसके बाद कारगिल वॉर में आर्मी ने किया. ओके, देन 1971 वॉर ने ऑपरेशन ट्राइडेंट किया था इंडियन नेवी ने, जिसमें उसने कराची पोर्ट को जाके बॉम्ब कर दिया था. और 4 दिसंबर को किया था हमने, जिसको कमेमोरेट करने के लिए वी सेलिब्रेट द इंडियन नेवी डे एज वेल. ओके, ऑपरेशन ट्राइडेंट. सो ट्राइडेंट वाज इन 1971 वॉर एंड त्रिशूल वाज इन 1999 वॉर. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. देन गोल्डन टेम्पल में जो खालिस्तान मूवमेंट एंड जरनैल सिंह भिंडरान वाले, ही वाज देयर. So to wipe out those Khalistanis, there were 2 operations that were done. One was Operation Blue Star, and then it was followed by Operation Black Thunder. Okay, these were done in the year 1984 and 86. Okay, Operation Blue Star and Operation Black Thunder. ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्लैक थंडर और ब्लैक टोर्नेडो में. That's why I've kept them together. Operation Black Tornado किसके लिए था? तो this was the 26/11 attacks. Okay, the Mumbai or Taj hotel attacks that were there. Okay, 26/11 attacks. Right. Then we have Operation Meghdoot that was in again 1984 to capture the Siachen Glacier. Okay, to capture the Siachen Glacier we have this Operation Meghdoot. ठीक है. Operation Cactus we did in Maldives. Okay. Operation Pavan was done with Sri Lanka. Okay. Operation Parakram was done in India only, basically after the 2002 Parliament attack. Okay. हमने क्या किया था? इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर दिया था, and we almost created a war-like situation with Pakistan. So that was called as Operation Parakram. ठीक है. Operation Devi Shakti was to take out Indians from the Afghanistan after Taliban took over Afghanistan. Okay, so Devi Shakti was about taking people out of Afghanistan. Operation Ganga was again after Russia-Ukraine war to take people, Indians, out of Ukraine. Okay, Operation Dost was in Turkey after the devastating earthquake that hit it. Okay, Operation Kaveri was about evacuating people from Sudan after 2023. Okay, Sudan crisis. Operation Maitri was after the Nepal earthquake. Okay, in the year 2015. Okay, and Vaccine Maitri was also there to deliver vaccines all around the world.
ऑपरेशन अजय इज टू टेक पीपल आउट फ्रॉम इजराइल, ठीक है, इन द इजराइल हमस वॉर. ऑपरेशन पोलो वाज डन इन 1948, ओके, टू लिबरेट हैदराबाद फ्रॉम द निजाम्स, ठीक है, रजाकार्स ने अटैक कर दिया था वहां पे एंड दे वर किलिंग एवरीवन. तो टू लिबरेट हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो वाज देयर, एंड ऑपरेशन विजय वाज देयर टू लिबरेट गोवा. ठीक है. विद दिस वील सी वन मोर थिंग, एंड दैट इज कि कुछ जो गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, ओके, द गैलेंट्री अवार्ड्स विच आर प्रेजेंटेड, ओके, गैलेंट्री अवार्ड्स आर बेसिकली देयर ऑफ टू टाइप्स, ओके. एक जिसे हम कहते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, और एक जिसे हम कहते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, ओके. तो वॉर टाइम और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स इफ वी सी, तो वॉर टाइम में आता है हमारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड द वीर चक्र. एंड पीस टाइम में आता है हाईएस्ट इज अशोक चक्र, ओके. देन वी हैव कीर्ति चक्र, ओके, एंड देन वी हैव शौर्य चक्र, ओके. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वॉर टाइम एंड पीस टाइम? देखो ये दिस इज द ऑर्डर, परमवीर चक्र हाईएस्ट, महावीर चक्र फॉलोड बाय वीर चक्र, एंड हियर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र. वॉर टाइम अवार्ड्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ओनली गिवन टू द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, इट इज ओनली गिवन टू द आर्म्ड फोर्सेस लाइक द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ओके. ये और किसी को नहीं मिल सकता है, पुलिस को नहीं मिल सकता है, सीआरपीएफ को नहीं मिल सकता. बट दिस अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, दे कुड इवन बी गिवन टू द पुलिस फोर्सेस, एंड नॉट ओनली पुलिस, दे कैन इवन बी गिवन टू सिविलियंस. इन्हें पुलिस को भी दिया जा सकता है, इन्हें सिविलियंस को भी दिया जा सकता है, दे हैव शोन ब्रेवरी. फॉर एग्जाम्पल अशोक चक्र, द फर्स्ट सिविलियन रेसिपिएंट वाज नीरजा भनोत, ओके. Who was नीरजा भनोट? She was a air hostess, okay, with Pan American Airlines. तो जब वो एयरलाइन और जब वो एयरप्लेन हाईजैक हो गया था बाई सम टेररिस्ट, तो शी गेव हर लाइफ टू सेव द पैसेंजर्स. तो उन्हें अशोक चक्र भी दिया गया था, एंड शी वाज आल्सो गिवन आई थिंक निशाने पाकिस्तान, दैट इज द हाईएस्ट से अवार्ड, यू नो, अवार्ड फ्रॉम पाकिस्तान, ओके, गैलेंट्री अवार्ड्स, ओके. सो व्हाट्स द डिफरेंस कि इसे पुलिस, इसे आर्मी वाले लोग भी मिलते हैं, ठीक है, आर्मी एयरफोर्स वालों को भी मिलता है, पुलिस को भी मिलता है और सिविलियंस को भी मिलता है, बट वॉर टाइम अवार्ड्स आर लिमिटेड टू आर्म्ड फोर्सेज ओनली, ठीक है. परमवीर चक्र 20 है इंडियन आर्मी के पास और 1 है इंडियन एयरफोर्स के पास, ठीक है. 1 इज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, जिन्हें मिला था 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में, ठीक है. नेवी डज नॉट हैव परमवीर चक्र एज ऑफ नाउ, ओके. वन मोर डिफरेंस इज देयर कि ये जो वॉर टाइम अवार्ड्स है ना, लाइक दे विल ओनली बी गिवन व्हेन देयर इज अ स्टैंड ऑफ बिटवीन द ऑफिशियल आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द टू कंट्रीज, ओके. अगर इंडियन आर्मी जा रही है और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रही है या फिर कुछ ऐसा, तब नहीं दिया जाता है वॉर टाइम अवार्ड, ओके. फॉर एग्जाम्पल द लास्ट वॉर टाइम अवार्ड वॉज गिवन ड्यूरिंग द गलवान क्लैश, ओके. इट वॉज गिवन टू कर्नल संतोष बाबू, महावीर चक्र की मिला था, ठीक है, गलवान क्लैश में. या फिर हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को मिला था वीर चक्र. वाई? बिकॉज ही डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड विद द पाकिस्तानी एयरफोर्स. बट अगर हम एक टेररिस्ट एक्टिविटी से इंगेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ही मिलता है. इनफैक्ट द पीपल हु कंडक्टेड द सर्जिकल स्ट्राइक, दे वेंट इनसाइड पीओके एंड दे कंडक्टेड, उन्हें भी कीर्ति चक्र ही मिला था, ओके. Why? Because they were actually fighting with the terrorist and not the official armed forces. Okay? The wartime does not necessarily mean wartime only, कि एक official war declared है. Although आखिरी परमवीर चक्र आपको 1999 में ही दिया गया था during the Kargil war. The 4 परमवीर चक्र awardees. Okay? Then some of the other awards that are given to the armed forces personnel are the PVSM, okay, परम विशिष्ट सेवा मेडल, द एवीएसएम अति विशिष्ट सेवा मेडल, एंड द वीएसएम, ओके, विशिष्ट सेवा मेडल. बट ये मिलता है बेसिकली आप जब हायर रैंक्स पे होते हैं, जैसे ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल, जो आप कमांडिंग रोल, आप एक स्ट्रैटेजिक रोल में हो, तब आपको ये दिया जाता है. ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड्स दैट वी हैव, ओके. सिविलियन अवार्ड्स अलग होते हैं. सिविलियन अवार्ड्स में आपका भारत रत्न आ गया, पद्म विभूषण आ गया, पद्म भूषण एंड पद्मश्री हो गया.
Okay, so we should remember these things as well. Okay, chalo. Okay, so that's it from my side. Okay, in this video. And as I said, if you want to know more, especially just say I have not covered the about military aircrafts and what kind of aircrafts is there. So that is covered very deeply in our Air Force video. Okay, so please go and see that. Okay, you'll find it in a lot of detail. All you that you need to know about Indian Air Force. Okay. Make sure that you subscribe to our channel, follow us on Instagram as well as Telegram to get the notes. Okay, and we'll be coming up with more such videos on defense जैसे अभी लाया तो वैसे we will come up with sports current affairs, we'll come up with geography, and we'll come up with the most important, so three more videos that are going to come. We're also going to come with reasoning and maths videos, so stay tuned with us. We are making sure कि इनसे आपको काफी help मिले आपके upcoming AFCAT examinations में. All right, so that's it from my side. All the best to everyone for your AFCAT examinations. Thank you very much.